हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8A का आंसर राइटिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ क्वेश्चन पेपर फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशन, राइट। एंड ये क्वेश्चन एक एमएसएमई रिलेटेड केस स्टडी पर बेस्ड है और इसमें एग्जामिनर को ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एमएसएमई के कॉन्सेप्ट्स और लॉ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से समझ में आता है, राइट। तो चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखो दोस्त, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी होता है। आपको लॉ के नॉलेज के साथ साथ सिचुएशन एनालिसिस भी करना पड़ता है। एंड इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपको एमएसएमई के लीगल फ्रेमवर्क का कितना क्लैरिटी है, आप रियल लाइफ सिनेरियोज को समझकर उनका सोल्यूशन लॉ के पर्सपेक्टिव से कैसे देते हो। एंड एमएसएमई व्हिच इज कॉल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये एमएसएमई का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नॉट ओनली एग्जाम्स के लिए बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी रिलीवेंट है, राइट। तो क्या करना है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ो, उसके हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करो। जो भी प्रॉब्लम है दी गई है उसका एक लॉजिकल और लॉ बेस्ड सॉल्यूशन करना है, राइट। तो एमएसएमई के प्रोविजंस का रेफरेंस दो, जैसे कि एमएसएमई एक्ट बेनिफिट्स, पेनल्टीज और कंप्लायंस रिलेटेड पॉइंट्स को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड सिंपल और क्रिस्प लैंग्वेज में लिखना है। आंसर का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम एनालिसिस और कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। एंड ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि ये स्टूडेंट सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा है बल्कि कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना जानता है, राइट। एंड बस याद रखना है कि लॉ की थ्योरी पेपर्स में प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। जितनी क्लैरिटी और डेप्थ आप अपनी आंसर्स में दिखाओगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8A का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सिस्टमेटिकली अप्रोच करते हैं ताकि आंसर नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट ऑल्सो इम्पैक्टफुल लगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8A। तो क्या है ये केस स्टडी। ये जो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल अबाउट एमएसएमई। All dues of MSME vendor have to be paid in time. In case of delay in making the payment, there will be some disallowance or interest payment to be made by the buyer under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, MSMED Act 2006. Right? So you are required to throw light on the same. What are to be disclosed in financial statement by the buyer entities. Right? So ये है question. See, as you know that under the Micro, Small and Medium Enterprises Development MED Act 2006, there are various provisions apply regarding payment to MSME vendors, right। जैसे कि टाइमली पेमेंट होना चाहिए। टाइमली पेमेंट जो है वो सेक्शन 16 में मेंशन किया गया है, सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट 2006, राइट। तो सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट के अनुसार द बायर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट to the MSME vendor within how many days? 45 days. Within 45 days from the date of acceptance of goods or services, whichever is earlier. Right? Delay अगर हुआ तो delay in payment. If the payment is delayed, then the buyer is liable to pay interest on the delayed amount at 3 times the bank rate notified by the Reserve Bank of India. Right? And disallowances for non-compliance क्या है? ये under section 23 में mention किया गया है that if a company fails to comply with the payment timelines, the buyer could face disallowances of such payment under the Income Tax Act. And disclosure क्या क्या करना है in financial statement, right? The buyer का जो responsibility है, the buyer must disclose in financial statement the principal amount outstanding to MSME vendors, interest जितना accrued हुआ है and due on such amounts, पेमेंट मेड टू MSMEs ड्यूरिंग द ईयर, कितना पेमेंट हुआ है MSMEs को ड्यूरिंग द ईयर में, एंड अमाउंट्स रिमेनिंग ऑन पेड बियॉन्ड द 45 डे पीरियड, राइट। जो बियॉन्ड 45 डे पीरियड में जो अमाउंट ऑन पेड हुआ है वो ऑन पेड अमाउंट को भी डिस्क्लोज करना है। एंड एडिशनल अगर कुछ इंटरेस्ट है, एडिशनल इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू टू डिलेड पेमेंट, वो भी डिस्क्लोज करना है, राइट। एंड दिस डिस्क्लोजर्स विल बी मेड अंडर द नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ये सब डिस्क्लोज करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सच अमाउंट्स, पेमेंट मेड टू MSMEs ड्यूरिंग द ईयर, amount remaining on paid beyond the 45 day period, and additional interest accrued due to delay in payment, right। ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन किया जाता है। तो नाउ
लेट्स राइट, तो कैसे हमको आंसर प्रेजेंट करना है? सी फास्ट यू कैन राइट दैट अंडर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, development, which is in short MSMED Act 2006, the following provisions apply regarding payment to MSME vendors, right? तो फर्स्ट टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट क्या है? सी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शन मेंशन करना है। सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट के अनुसार द बायर इज required to make payment to the MSME vendor within how many days? Within 45 days. Within 45 days from the date of acceptance, from the date of acceptance of goods or services, whichever is earlier, right? तो ये है टाइमली पेमेंट सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग MSMED एक्ट के अनुसार द बायर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द MSME वेंडर विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच एवर इज एर्लियर, राइट? देन आता है डिले इन पेमेंट, राइट? अब डिले इन पेमेंट जो है, इफ द पेमेंट इज डिलेड, the buyer is liable to pay interest on the delayed amount, right? So you can write that if the payment is delayed, then the buyer is liable to pay interest on the delayed amount at three times the bank rate notified by the Reserve Bank of India, right? इसको कहते हैं RBI। देन आता है डिसअलाउंस फॉर नॉन कंप्लायंसेस, क्वेश्चन का जो भी रिक्वायरमेंट है ऐसे ही आपको आंसर प्रेजेंट करना है। डिसअलाउंस फॉर नॉन कंप्लायंस क्या है? सी डिसअलाउंस फॉर नॉन कंप्लायंस ये सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ऑफ द MSMED Act, if a company fails to comply with the payment timelines, the buyer could face disallowances of such payments under the Income Tax Act,
अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है। टाइमली पेमेंट क्या है? सेक्शन 16 ऑफ MSME एक्ट, द बायर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द MSME वेंडर विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच एवर इज earlier, and in case of delay in payment, if the payment is delayed, the buyer is liable to pay interest on the delayed amount at three times the bank rate notified by the Reserve Bank of India. Similarly, disallowance for non-compliance के केस में under section 23 of the MSME Act, if a company fails to comply with the payment timelines, the buyer could face disallowance of such payment under the Income Tax Act, right? And most importantly, जो financial statement है वहाँ पर कैसे disclosure किया जाएगा, ये सबसे important है. Let's write disclosure in financial statements. डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो कैसे डिस्क्लोज करना है? द बायर मस्ट डिस्क्लोज, बायर को डिस्क्लोज करना है द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या है? फर्स्ट, नंबर 1, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू MSME vendors. Then second, interest accrued and due on such amounts, right? Then third, payment made to MSME, payment made to MSMEs during the year, कितना पेमेंट हुआ है MSME को during the year, right? Then 4, amounts remaining unpaid, amounts remaining unpaid beyond the 45-day period. Then 5, additional interest accrued due to delays in payment, राइट। तो डिस्क्लोज करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, द बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर मस्ट डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या क्या रिपोर्ट करना है? फाइनेंशियल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू MSME वेंडर्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सच अमाउंट्स, देन पेमेंट मेड टू MSMEs during the year, and amount remaining unpaid beyond the 45-day period, and any additional interest accrued due to delays in payment, right? तो ये 5 important things जो कि buyer must disclose in financial statement. And most important, these disclosures should be made under the notes to accounts in the financial statements, right? The disclosure should be made under the notes to accounts in the financial statements. तो ये सब डिस्क्लोज करना है, राइट। तो ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन में दिया गया था ऑल ड्यूज ऑफ MSME वेंडर हैव टू बी पेड इन टाइम, इन केस ऑफ डिले इन मेकिंग द पेमेंट देयर विल बी सम disallowance or interest payment to be made by the buyer under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, and you are required to throw light on the same and what are to be disclosed in financial statement by the buyer entity. तो मैंने सब कुछ मेंशन किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ मेंशन किया, जैसे कि अंडर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 द फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई रिगार्डिंग पेमेंट टू MSME वेंडर्स। फर्स्ट, टाइमली पेमेंट कैसा होगा ना, सेक्शन 16 में मेंशन किया गया है
द बायर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द एमएसएमई वेंडर विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच एवर इज अर्लियर। ये है टाइमली पेमेंट, राइट, 45 days वाला। देन डिले इन पेमेंट, इन केस ऑफ डिले, इफ द पेमेंट इज डिलेड, द बायर जो है, बायर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द डिलेड अमाउंट ऑफ थ्री टाइम्स द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, right? And third, disallowance for non-compliance under section 23 of the MSMED Act 2006. If a company fails to comply with the payment timelines, the buyer could face disallowance of such payment under the Income Tax Act, right? ये है disallowance for non-compliance, ये सेक्शन 23 में मेंशन किया गया है कंप्लीटली। देन आता है डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल रिपोर्ट में, राइट? तो बायर जो है, buyer is the responsible person. The buyer must disclose the following in financial statement. क्या क्या डिस्क्लोज करना है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है टू एमएसएमई वेंडर्स, देन इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सच अमाउंट्स, देन थर्ड पेमेंट मेड टू एमएसएमईज ड्यूरिंग द ईयर, कितना पेमेंट मेड हुआ है एमएसएमई को, एंड अमाउंट रिमेनिंग ऑन पेड, कितना अमाउंट रिमेनिंग ऑन पेड है बियॉन्ड द 45 day पीरियड, एंड देन एडिशनल इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू टू डिलेज इन पेमेंट, राइट? तो इतना ये सब जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब डिस्क्लोज करना है फिनेंशियल रिपोर्ट में, एंड दिस डिस्क्लोजर शुड बी मेड अंडर द नोट्स टू अकाउंट्स। रिमेंबर, ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन किया जाएगा, ये सब डिस्क्लोजर को नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन किया जाएगा, राइट? नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? तो ऐसे ही आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है, एंड ऐसे प्रेजेंट करने से आपको पूरा फुल टू फुल जो 7 मार्क्स है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फुल टू फुल 7 मार्क्स मिल जाएगा, राइट? तो बहुत इजी है, एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आपका सिर्फ फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि टाइमली पेमेंट कब होना चाहिए, डिले इन पेमेंट के केस में क्या लाइबिलिटी होगा बायर के लिए, एंड अगर डिजालेंस फॉर नॉन कंप्लायंस के वजह से डिजालेंस क्या डिजालेंस होगा, राइट? तो डिजालेंस फॉर नॉन कंप्लायंस मेंशन किया गया है सेक्शन 23 में, एंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MSMED एक्ट, इफ ए कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विथ द पेमेंट टाइमलाइंस, then the buyer could face disallowance of such payment under the Income Tax Act. And क्या disclose करना है financial statement में? The buyer must disclose the following in the financial statement. First, principal amount, then interest accrued, payment made to MSMEs, amounts remaining unpaid beyond 45 days, additional interest accrued due to delay in payment. एंड ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन किया जाएगा, राइट? तो इतना ही आपको ऐसे ही लिखना है, एक पेज में ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट? एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है, वो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8A. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.